So first of all, some very basic information. It was enacted on the 21st of March 1908 and it came into effect from the 1st of January 1909. ये आपके प्रीलिम्स में कभी कभार पूछा जाता है आपसे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जुडिशरी में हो सकता है अब कम ट्रेंड रह गया है ये डेट्स पूछने का, माइनर एक्ट की डेट्स ज्यादा पूछते हैं, बट स्टिल दे कैन डेफिनेटली आस्क यू. एंड ऑल्सो ये एपीओ टाइप के एग्जामिनेशन में भी कभी पूछा जा सकता है. 7th शेड्यूल इज बेसिकली दैट शेड्यूल of the constitution which contains 3 different lists, list 1, list 2, list 3, which is the union list, the state list and the concurrent list. अब इस जो लिस्ट दी हुई है उसमें एंट्रीज हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिन पे लॉ बनाया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 7th शेड्यूल की बात करें, सो फर्स्ट लिस्ट इज द यूनियन लिस्ट, जहां पे यूनियन गवर्नमेंट, that is the central parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha with the president, they can exclusively make laws on those subjects. अगर आप स्टेट लिस्ट की बात करो, so state list is basically the second list wherein you have those entries, those subjects on which exclusively the legislatures of the states, the Vidhan Sabhas, Vidhan Parishads with the governor, the legislature of the state can make laws exclusively. जो थर्ड लिस्ट है, जो थर्ड लिस्ट है, लिस्ट 3, दैट इज द कंकरेंट लिस्ट, जिसपे अगर आप देखोगे तो यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज द पार्लियामेंट, एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स बोथ हैव कंकरेंट पावर्स. कंकरेंट मतलब अकरिंग एट द सेम टाइम, ऑफ द सेम लेवल, दे हैव द सेम पावर टू मेक लॉज ऑन दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. अगर आप फॉर एग्जाम्पल सीआरपीसी देखोगे, दैट ऑल्सो फॉल्स इन द थर्ड लिस्ट. आपने कभी अगर सीआरपीसी की बैराक देखी होगी तो आपको सेक्शंस के बाद लिखा हुआ मिलेगा स्टेट अमेंडमेंट्स. देखा है किसी ने? वो जो स्टेट अमेंडमेंट्स होते हैं, दैट मींस द लॉ हैज बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री, बट द डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स have amended certain provisions according to the application in that state. For example, before the 6th of June 2019, I'm just giving an example so that you understand. Before 6th of June 2019, the concept of anticipatory bail, which is in 438, section 438, chapter 33 of CRPC, that was not applicable in the state of Uttar Pradesh. From 1976 till the 6th of June of 2019, anticipatory bail was not at all applicable in the state of Uttar Pradesh. उसके बाद वापस से reintroduce हुआ है. So it was a law made by the parliament. It was applicable throughout the country, but Uttar Pradesh legislature had amended that particular section and it was not applicable in that particular state. So जो third list होती है उसमें generally ये laws fall करते हैं, as is the CPC, wherein you can have the parliament also making the laws and you can have the state legislature also amending those laws. Is this clear to everybody? So even CPC falls in schedule number 7, list number 3, and the entry is 13. In the 13th entry, if you see, you will have CPC, limitation, even arbitration, which is mentioned in schedule 7, list 3, entry number 13. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, हु हैज ड्राफ्टेड सीपीसी? सीपीसी को ड्राफ्ट किसने करा है? गलत जगह पहुंच गए. सीपीसी को किसने ड्राफ्ट करा है? सर हेनरी अर्ल रिचर्ड्स. लिख लीजिए. इट वॉज ड्राफ्टेड बाय Sir Henry Earl Richards. Sir Henry Earl Richards. Henry Earl Richards. अच्छा, सीपीसी 1908 से पहले भी कोई और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर था? कौन सा था?
1908 से पहले कोई सीपीसी था? इट वाज 1882. 1882. It was CPC 1882. It had 652 sections. एक बार पूछा गया है पहले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. CPC 1882, it had 652 sections. And also, a very important question that should come in your mind, और पूछा भी जाता है, कभी कभार पूछ सकते भी हैं. This Code of Civil Procedure has been enacted in 1908. अभी हमने देखा. It came into effect from 1st of January 1909. Now, is this a pre-constitutional law or a post-constitutional law? Pre-constitutional law. Why? When was the Constitution enacted? Enacted. Enacted. 26th of November 1949. And when was it enforced completely? 26th of January 1950. ठीक है. This law was into effect even before, like all other laws. बहुत सारे ऐसे laws है, for example contract, for example partnership, for example sale of goods, for example IPC. They are all in force even before the Constitution came into force. How are they still operative? पार्लियामेंट को नया लॉज नहीं बनाने चाहिए थे? How are they still operative? Article 372. ठीक है. So primarily there are two reasons why even a pre-constitutional law is adopted, and this is Article 372 not only applies to the Code of Civil Procedure, but Article 372 applies to all. Contract Act is 1872. Indian Evidence Act is 1872. Why are they still in operation when we have a constitution now? And constitution, as I call it, and I'll tell you also later, is what is known as the Grund Norm. What do you understand by a Grund Norm? All other laws are subject to the Grund Norm. Grund Norm is basically the foundation. If you are not following the Grund Norm, if you are in violation of the Grund Norm, you will not be able to apply that law. It's not possible for you to apply that law. So constitution being the Grund Norm, why are we still applying CPC when it is a pre-constitutional law? The answer is that Article 372 adopted it and said that it's fine, you pass muster of the Constitution, the constitutional principles are not being violated by provisions of CPC, and hence we are going to take you forward. It is applicable to all other pre-constitutional laws also. And what is Article 13 Clause 1? If you see Part 3 of the Constitution, which talks about the fundamental rights, Article 13 Clause 1 is a part of the chapter of fundamental rights. And Article 13 Clause 1 says that if there is a pre-constitutional law, yani ki, for example CPC, a law which was enacted and passed before the Constitution, and if such pre-constitutional law is violative of Part 3 of the Constitution, that is, if a law which was passed before the Constitution came into force is in direct conflict or violation with the fundamental rights guaranteed in the Constitution, in that particular sense, that law will be null and void. कहने का मतलब, for example, if we have the Code of Civil Procedure, if one particular aspect, one particular provision, one particular procedure is violative of the Constitution, Article 13 Clause 1 will immediately strike it out. मतलब उस चीज को सेवर कर दिया जाएगा, which is known as the doctrine of severability. You'll read it in the Constitution. I'm just trying to explain why have I mentioned Article 13 Clause 1. It will be immediately severed, separated, stricken out from that particular law. अगर वो हो सकता है तो, नहीं हो सकता तो पूरे लॉ को एक्लिप्स कर दिया जाएगा. एक्लिप्स मतलब it will be shadowed, overshadowed. यानी कि Article 13 Clause 1 will simply blacken out the entire law. It will not be operational. And the moment you remove the unconstitutional part, which was violative of the fundamental rights, it will again come back to life. So CPC is not even violative of Part 3 of the Constitution or fundamental rights or any part of the Constitution. That is why it has been adopted by Article 372 that, okay, Mr. CPC, now you are going to continue even after the enforcement of the Constitution.
and at the same time it is not violative of any provision which is mentioned in part 3 of the constitution, which is the fundamental rights. Therefore article 13 clause 1 also says, wonderful, okay, you carry on. जब आप कुछ ऐसा प्रोविजन अगर बाय अमेंडमेंट भी ले आओगे which is violative, for example नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ये आया था, दिस वाज अ प्रोविजन, अभी भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बैरक में मिलता है, बट इट वाज रिमूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, held as unconstitutional. For example, section 497 of IPC, what is it? Adultery. है ना adultery? That was also because of virtue of article 13 clause 1, it was held to be unconstitutional because it's a pre-constitutional law, 1860. For example, 377, that was also by method of judicial review under article 13 clause 1. 377 सबको पता है ना? So now the Supreme Court has said that consensual homosexual relations, consensual sexual relations between persons of the same gender, they are not at all an offense. Earlier they were. Being violative of 14, 19, 21, they said that it has to go. Similarly, CPC here. CPC does not have any particular provision, जो आज तक कभी ऐसा हुआ हो और probably होगा भी नहीं. CPC does not have any provision which was violative of the constitution. No. So therefore article 372 adopted it also, and article 13 clause 1 also said that we are continuously testing you and you are passing this test, therefore you can continue to operate. Is this clear to everybody? Fine. Sometimes, you know, some very sundry factual questions are asked. For example, how many sections are there in CPC? There are 158 sections, and how many orders are there? 51. 51 orders. कौन से schedule में? First schedule. 51 orders in the first schedule, 158 sections in 12 parts, and 51 orders in the first schedule. You tell me, हम हर लॉ को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने आईपीसी को देखा, 511 सेक्शंस, अमेंडमेंट के बाद तो थोड़े और भी ज्यादा है. वी डोंट हैव एनी ऑर्डर्स, एनी रूल्स. सेक्शन सेक्शन सेक्शन, दैट्स ऑल. व्हाई डू वी हैव ऑर्डर्स एंड रूल्स हियर इन सीपीसी? जब हम 1882 में देखते हैं तो ठीक था, 652 सेक्शंस थे. सेक्शंस बहुत ज्यादा है. ये सेक्शंस अलग कर दिए 158, 51 ऑर्डर्स अलग कर दिए. ये डिफरेंशिएशन और ये बाइफर्केशन क्यों हमें सीपीसी में देखने को मिलता है? कैन एनीबॉडी टेल मी प्लीज? यू सी द सेक्शंस, 158 सेक्शंस इन सीपीसी, दे आर मोर सब्सटैंटिव इन नेचर. मोर सब्सटैंटिव, नॉट प्योरली सब्सटैंटिव, बट दे आर मोर सब्सटैंटिव इन नेचर. अब सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? सब्सटैंटिव लॉ, फॉर एग्जाम्पल लॉ लाइक आईपीसी, इट डिफाइंस योर राइट्स एंड लायबिलिटीज. कॉन्ट्रैक्ट, it defines your rights and liabilities. Partnership Act, it defines your rights and liabilities. But how will you enforce these rights and liabilities? They are given in procedural laws. They are given in procedural laws. So substantive laws will define your rights and liabilities, but procedural laws on the other hand will give effect to these rights and liabilities. Example लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल. मान लीजिए किसी के घर में चोरी हो जाती है. There is theft which has been committed in a person's house. Now that is a dwelling place. तो कौन से सेक्शन में पनिशेबल होगा? कौन से सेक्शन में? 380, theft in a dwelling place. It will be punishable under 380 of IPC. Now you see, when it is punishable under 380 of IPC, we are giving imprisonment. How will you enforce? अब चोरी हो गई आपके घर में, अब आप क्या करोगे? अगर आप चिल्लाते रहो चोरी हो गई, चोरी हो गई, it is not going to be of any use. Your right that you have inherent in you, that your property will not be damaged. IPC चार प्रॉपर्टीज की बात, चार राइट्स की बात करता है: बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी. योर प्रॉपर्टी शुड नॉट बी डैमेज्ड, शुड नॉट बी मेस्ड विद, शुड नॉट बी टिंकर्ड विद बाय एनी पर्सन विदाउट ऑथराइजेशन. कोई आपके घर में बिना परमिशन के नहीं घुस सकता, कोई आपके फोन को चुरा के नहीं जा सकता, कोई बिना अथॉरिटी के आपकी गाड़ी को आपके सामने से उठाकर नहीं लेके जा सकता. There is what we know as procedure established by law. कहां पर है ये? Article 21. We have procedure established by law. अगर आपकी परमिशन नहीं भी हो तो लोन डिपार्टमेंट आपकी गाड़ी को हाइपोथिकेट करके वहां से उठा के लेके जा सकती है. क्यों उठा के लेके जाओगे भाई? क्योंकि आपने लोन अमाउंट नहीं पे करा. That is a procedure established by law. There are rules, there are regulations to even take away your rights.
फॉर एग्जाम्पल, जब आपको स्टोरी के लिए इंप्रिजन करेंगे, वी विल कर्टेल योर पर्सनल लिबर्टी, बट देयर इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यू विल नॉट डू इट आर्बिट्ररीली। उस प्रोसीजर के बेसिस पर ही आप किसी की लिबर्टी को कर्टेल करोगे। तो अगर ऑफेंस दिया है इन आईपीसी, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 380, जहां पे यू हैव कमिटेड थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग प्लेस, आपको सजा मिलेगी, लेकिन उस सजा को आप एनफोर्स कैसे करोगे? सो दिस सब्सटैंटिव लॉ ऑफ आईपीसी which defines your rights, which gives a liability to each and every person in the world, कि भाई आप सबकी लाइबिलिटी है कि मेरी प्रॉपर्टी को हार्म ना करे, हम सबकी लाइबिलिटी है कि इनकी प्रॉपर्टी को हार्म ना करे, एक्सेट्रा। इट्स अ राइट इन रेम, इट इज एक्शनेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। वही 380 कह रहा है आईपीसी का कि भाई इफ यू आर कमिटिंग थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग प्लेस, यू आर ब्रीचिंग दैट पर्सन्स राइट टू पीसफुली एंजॉय एंड possess his property. How dare you enter somebody's house and take away his property? No, you do not have any authority. You cannot even stay in somebody's house for a period longer than you have been authorized. It will become trespass. It will become trespass if a guest, you ask the guest, please get out. मन करता है ना कभी कभी, you ask the guest, please जाओ, और वो गेस्ट अगर रुका रहे, इट इज ट्रेसपास, इट इज ट्रेसपास। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, योर राइट इज बीइंग वायलेटेड, बट हाउ विल यू एनफोर्स इट? You will go and get an FIR registered under 154 CRPC. You will ask the police officer to conduct investigation, etc., etc. Then trial will be conducted, and then ultimately there will be a situation where judgment of acquittal or conviction is passed. But this cannot be an arbitrary procedure. It has to follow the basic essential principles of the Constitution. It has to be a procedure established by law. अब सीपीसी जहां तक बात आती है, कहीं ना कहीं जैसे सर ने बताया, it is both procedural and substantive in nature. If you see, the sections are more substantive. They are somewhere or the other, if not giving you rights, they are defining your rights and liabilities. Somewhere or the other. But at the same time, to give effect to even these substantive principles which are there in the sections, orders and rules have been made. Actually में rules have been made, but orders are in the form of chapters. ये 51 chapters हैं एक तरीके से, जिनको हम orders कहते हैं, जिसमें different rules हैं कि भाई for example, अगर आपने कहीं पे सूट करना है, तो उस जगह पे सूट करोगे कैसे? प्लेंट में क्या लिखोगे? रिटन स्टेटमेंट में रिप्लाई कैसा दोगे? रिप्लाई में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए? दे आर डिफाइनिंग द प्रोसीजर, हाउ मेनी डेज, हाउ मच टाइम, टिल हाउ लॉन्ग कैन यू लेट अस से एडजर्न द प्रोसीडिंग्स, कितना लंबा ट्रायल चल सकता है, अपील अगर करना चाहते हो तो कब अपील करोगे, कितने टाइम तक अपील कर सकते हो। सो दीज प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज, द प्रोसीजर हैज बीन established in the orders and rules which is in the first schedule.